Hi friends, welcome to Studies with Joy. You are welcomed. So, our today's topic is 9th standard English poem 2.3 Somebody's Mother, written by the famous poet Mary Dow Dry. So, it is a very famous poet. So, this is a very nice poem. We are going to learn many things from this poem. We should learn also, and it is giving us a very nice teaching that we should always remember, because we should help those anyone we should help anyone who is in need. क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में जब हमें नीड पड़ेगी ना, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो ही हमें हेल्प करने आएगा. गॉड विल सेंड एनीवन एल्स टू हेल्प अस, बट इफ वी आर हेल्पिंग अदर्स देन ओनली गॉड विल सेंड. If we don't help anyone and be only selfish, then no one will, not even God will help us. So that is the message conveyed by this poem and the poet. So let's start. Before starting, please like and subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video, and also press the bell icon button and also share the video with your friends. So let's start. The first paragraph. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of a winter's day. So how the woman was how? She was old, ragged and grey, and bent with the chill of a winter's day. So what is the season mentioned in the poem? Winter. So it is telling us there is an old woman who is standing and she is little bit bented due to the freeze. मतलब cold है ना, ठंडा लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा झुक के खड़ी है. As she is an old woman, she is feeling cold. Even everyone will be feeling cold as it is the season of winter. So it is describing, some words are given, descriptive words are given about the woman, which we should remember, because questions can come from that the woman was old, ragged and grey. How was the woman? Old, ragged and grey. And this is also tautology. Tautology is a figure of speech which I will be explaining in the video. So please don't skip the video, watch it full. Okay? And bent with the chill of a winter's day, the streets were white with the recent snow. So how were the streets? Streets were white because the snow had covered the streets. And the woman's feet with age were slow. The woman's feet were slow as she is aged. The aged people walk little slow. Everyone knows that the woman was walking little slow. As I have shown an image like that, atmosphere was created as mentioned in the paragraph stanza. Second stanza. At the crowded crossing she waited long, jostled aside by the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. So क्या? At the crowded crossing she waited long. So बहुत ज़्यादा crowd हो गई थी. Crossing में उसने बहुत टाइम तक वेट किया. अभी बहुत सारे लोग थे, फिर भी she is waiting. Why? Because she has to go beside or after, but she has to cross the road and she is afraid of that. Jostle aside, jostle means pushed. So she was pushed aside by the careless throng. So the people are in their own thing. सब लोग खुद के काम काज में पड़े हैं, तो वो उसको धक्का दे रहे हैं. As this is not nice. We should have been little bit careful that we are not even so much careless of human beings who passed her by, unheeding the glance. Unheeding means neglecting. Unheeding means neglecting the glance of her anxious eye.
सो सब लोग उसको अवॉइड कर रहे थे कि उनको, कि बहुत लोग तो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने ध्यान दिया उन्होंने अवॉइड किया। वो अकेली ढूंढ रही थी किसी को अपनी मदद के लिए, ताकि वो क्रॉस करे वो रोड। वो उसे हाथ में हाथ मिलाकर उसे क्रॉस करवाए रोड। शी वॉज सर्चिंग फॉर हर, फॉर समवन, बट एवरीवन वाज नेग्लेक्टिंग हर। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हम लोग कितने भी जल्दी में हो, लेकिन एटलीस्ट वी शुड हेल्प, वी शुड नॉट forget humanity, the values of humanity. Let's next go next para. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. So there came happy boys like a flock of sheep. So happy boys means who were left out from the school. सो अभी स्कूल उनका छुट्टा होता है तब सभी जो भी बच्चे होते हैं जब स्कूल छूट गए होते तो कितना खुशी होकर चिल्ला चिल्ला के आते रहते हैं. सो दीज हैप्पी बॉयज आर लेफ्ट बाय द स्कूल. they just left the school and they are very happy and they are laughing and shouting and full on chill and walking on the road with full enjoyment. So they are coming like a flock of sheep. So that is a means it is just describing us and it is using a comparison. Okay. And it is also telling us that these boys are very happy and glad in the freedom. Though वो बता रहे कि आज़ादी मिल गई as a freedom from the school. So that's making it more effective, more better poetic effect. So hailing the snow, piled means gathered, white and deep. So they were hailing the snow, piled with white and deep. So वहाँ पर खेलते खेलते आ रहे थे स्नो में. Past the women so old and grey, hastened the children on their way. So वो लोग भी पास कर दिए. They also passed the women. वो भी उसको देखे लेकिन वो फिर भी आगे गए और अपने ही आगे में अपने ही रास्ते पे चलते रहे. That is very wrong. They also avoided her. That was very wrong. They are the new generation. They should not do like that. It's their duty to help her. Let's go further. None offered a helping hand to her. किसी ने भी उसे एक हाथ नहीं दिया. उन बच्चों में से भी किसी ने नहीं, ना ही इतने सारे लोग जो आजू बाजू चल रहे थे उनमें से किसी ने नहीं दिया. ऐसा तो नहीं करना चाहिए था. So weak and timid, afraid to stare. So weak and timid. So she was very weak. Timid means afraid to stare means she was very afraid to cross on her own. Lest the carriage wheels on the horse's feet should trample her down in the slippery street. So उसे किस बात का डर था कि वो अगर उस the street was slippery, so if she falls or slips then what will happen? So if she falls and slips on the street and the cart, the carriage's wheels will crush her down. So उसको डर लग रहा था कि वो अगर स्लिप होकर गिर गई और रथ आया means that carriages on, in the past people used to use the wheels, carts like attached to the horses which will carry them. So उसे डर था कि वो उनके नीचे क्रश हो जाएगी अगर गिर गई तो. At last came out of the merry troop. Merry means happy. The gayest boy of all the group. Gayest means happiest. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. So वो जो ग्रुप था ना उनको देख के गया था हैप्पी बॉय का, उनमें से एट लास्ट अभी उनको उसे देखकर उस पर मर्सी मीन्स दया आई तो वो आया. उनमें से सबसे हैप्पीएस्ट बॉय था. ही वॉज द हैप्पीएस्ट बॉय ऑफ द ग्रुप. ही पॉज्ड बिसाइड हर. वो उसके बाजू में आया और बहुत विस्पर्ड लो मीन्स टॉक्ड वेरी सॉफ्टली
I will help you across if you wish to go. So उसने बोला कि if तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. So let's go further. Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm. So उसने अपना हाथ, her aged, she was an old woman, so her aged hand she put it on his strong young arm, and she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own was young and strong. So उसने trembling means shivering. So उसके पैर थोड़े से shivering थे, तो उसने उसके उन shivering पैर को guide किया, और उसको proud भी था कि उसके पैर बहुत young और strong है. So as he is a small boy, so उसे तो ऐसा ही लगेगा. Means boy, small children have some courage, eagerness or some little bit proud in themselves कि हाँ मैं ज़्यादा young हूँ and strong हूँ. But as usual it is for everyone. Nothing is there to be proud. But as mentioned in the stanza, then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. So उसके फ्रेंड्स के पास वो वापस गया, और उसका हार्ट मतलब उसका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश था, और well content means satisfied. So whenever we help anyone ना, we feel very much happy. हमें बहुत खुशी होती है, और जो हम जिसे हेल्प करते हैं ना उससे भी बहुत खुशी होती है. So we should help, because whom we help will also feel happy, and if I am helping, then I will also feel happy. Next paragraph. She is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. So ये बोलता है उसका his friends ask him why you helped her. ऐसे ही सब लोग पूछते भी हैं. So he told that she is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. So वो भी किसी की mom है, वो किसी की माँ है. So बस वो सिर्फ एज्ड हो गई है, और मतलब एज हो गई उनकी, ओल्ड हो गई है, स्लो है थोड़ी सी. So what's the matter in that? But she is mother, somebody's mother, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand, if ever she is old and poor and grey, and her own dear boy so far away. So कितना अच्छा message दे रहा है वो. He is conveying a very nice message that किसी दिन in future, someday in future, when my mom will be asking for a helping hand from mothers, so someone a stranger like him will help her when she will be old, and old and slow, and her own dear son will not be near her, will be far away. So वो इतना अच्छा मैसेज दिया है कि किसी दिन भविष्य में कि कभी उसकी मॉम जब ओल्ड हो जाएगी, तब वो अगर ऐसी तरह किसी से हेल्पिंग हैंड मतलब किसी की मदद चाह रही होगी, तो कभी मेरी तरह ही कोई अजनबी उनकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि मैंने इनकी मदद की तो कोई और ज़रूर ये इनकी मदद, मेरी मॉम की मदद करेगा जब मैं उनके पास नहीं होऊंगा, उनका बेटा. तो कितना अच्छा मैसेज है. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आज जिसे भी हेल्प कर रहे, वो नेसेसरी नहीं है कि वो फ्यूचर में आपको वही हेल्प करे, वो ही करना चाहिए. दैट इज़ नॉट नेसेसरी. एनी वन विल बी कमिंग. कोई भगवान किसी को भी किसी भी रूप में आपकी इस मदद का फल देंगे आपको फ्यूचर में, जब आपको ज़रूरत होगी. एवरीवन इज़ नीडिंग हेल्प. कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास टेंशन नहीं है, जिसको टेंशन नहीं है किसी भी बात का, ना ही जिसको हेल्प चाहिए किसी की. एवरीवन इज डिपेंडेंट. Next, last paragraph. Somebody's mother bowed her low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy. So you know that old people have a habit of doing a prayer before going to bed. तो सोने से पहले वो एक प्रार्थना करते गॉड से. तो शी ऑल्सो डिड द लेडी
who had that boy had helped. So she what she prayed that God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy. So उसने बोला कि वो आप उस बच्चे पे उस यू बी काइंड टू दैट नोबल बॉय, ही इज़ वेरी नाइस बॉय, और वो भी किसी का बेटा है, किसी का गर्व है और किसी की खुशी है. ही इज somebody's son, pride and joy. So please be kind to him. वाओ. और और जिसकी भी आपने हेल्प की ना, वो आपके लिए हमेशा प्रे ज़रूर करेगा, और वो प्रेयर कभी भी अनफुलफिल नहीं जाएगी, वो प्रेयर हमेशा फुलफिल होती है. सो ये पोएम यही बताता है कि वी शुड हेल्प अदर्स. इवन हमको ये सोच के हेल्प नहीं करना चाहिए कि वो भी हमें हेल्प कर रहा है तो हम भी हेल्प करते हैं. दैट्स नॉट अ हेल्प. हमें विदाउट सेल्फिशनेस वी हैव टू हेल्प. ओके, अंडरस्टैंड. अब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बोला था जैसे कि मैं टाउटोलॉजी और क्लाइमेक्स जो कि एक नए फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हुए हैं इस पोएम में, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्लाइमेक्स, व्हाट इज क्लाइमेक्स? इन रेटोरिक अ क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स, फ्रेजेस और clauses are arranged in order of increasing importance in its use with clauses. It is also sometimes known as auxesis. सो व्हाट इज़ क्लाइमेक्स? क्लाइमेक्स मतलब वर्ड्स को ना अपने ऐसे मतलब अरेंज किया जाता है अपने इम्पोर्टेंस के हिसाब से, मतलब दे आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. आई विल जस्ट गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम. जैसे कि द वुमेन वॉज ओल्ड, रैग्ड एंड ग्रे. सो ओल्ड है, उससे थोड़ा कम रैग्ड, उससे ज़्यादा कम ग्रे. तो इस तरह अरेंज किया उन्हें प्रॉपर मैनर में अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस उसे बोल सकते हैं. और एक एग्जांपल देते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि फॉर ऑल शी इज एज्ड, पुअर एंड स्लो. एज्ड, फिर आता है पुअर, फिर आता है स्लो. तो दैट इज ऑल्सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड्स. सो इस तरह अरेंज किए जाने वाले वर्ड्स को बोलते हैं क्लाइमेक्स. वन मोर इज देयर, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम. हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय. सो सन, प्राइड और जॉय, इस तरह से अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. Tautology. A tautology is an expression or phrase that says the same thing twice, just in a different way. For this reason, a tautology is usually undesirable, as it can make you sound worthier than you need to be and make you appear foolish. तो tautology क्या होता है? tautology में ना दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका मीनिंग सिमिलर. टू वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लाइन ऑफ मीनिंग सिमिलर. एंटीथेसिस में क्या होता है? जब दो वर्ड्स एक ही लाइन में ऑपोजिट मीनिंग के यूज होते हैं. लेकिन tautology इज ऑपोजिट टू दैट. उसमें दोनों वर्ड्स सिमिलर मीनिंग के यूज होते हैं. एग्जाम्पल, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे. सो ओल्ड, रैग्ड, ग्रे इस लाइन के लिए सिमिलर मीनिंग के हैं. सो ये tautology हो जाता है. Okay, one more example I will take that. So weak and timid, afraid to stir. Weak and timid, that is again a tautology. One more I will take. She placed and so without hurt or harm. Hurt or harm इधर एक ही तरह का मीनिंग बता रहे हैं. So that is tautology. Okay. Let's go. I'm going to tell you paragraph wise, line wise the figure of speech of this poem. You can note it इन योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि इस पोएम में हर एक लाइन को अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच है. फर्स्ट लाइन, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे. क्लाइमैक्स एंड टाउटोलॉजी. सेकेंड लाइन, नो फिगर ऑफ स्पीच. थर्ड लाइन, एलिट्रेशन. फोर्थ लाइन, एलिट्रेशन एंड ऑल्सो इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब जो वर्ड्स है वो लाइन में उन्हें करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, आड़ा टेढ़ा करके लिखा है ताकि अच्छा बेटर पोएटिक इफेक्ट हो. जैसे कि एंड द वुमेन्स फीट विथ एज वर स्लो. सो वो इस तरह आना चाहिए था, विच एज द वुमेन्स फीट वर स्लो, इस तरह आना चाहिए था. तो वो नॉट इज द करेक्ट ऑर्डर. नेक्स्ट पैरा में फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं. फर्स्ट लाइन इन्वर्जन, सेकेंड लाइन नो फिगर ऑफ स्पीच, थर्ड लाइन इन्वर्जन, फोर्थ लाइन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट पैराग्राफ, let's go. First line, onomatopoeia.
ओनोमोटोपिया मतलब एक साउंड क्रिएट होता है, एक सेंटेंस में साउंड को स्पेसिफाई किया जाता है, तब वो ओनोमोटोपिया होता है। जैसे कि डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, सो लाफ्टर एंड शाउट एक साउंड क्रिएट कर रहा है। वरना द डॉग बार्क्ड, तो उसमें बार्क एक साउंड है, सो वो भी ओनोमोटोपिया हो जाता है। Glad in the second line, no figure of speech. Third line, simile. Fourth line, no figure of speech. Fifth line, tautology. Sixth line, no figure of speech. Next para. First line, alliteration. Second line, tautology and climax. Third line, no figure of speech. Fourth line, alliteration. Next. First line, no figure of speech. Second line, no figure of speech. Third line, onomatopoeia. Fourth line, repetition. Next para. फर्स्ट लाइन एंटीथेसिस, क्योंकि फर्स्ट लाइन में एज्ड एंड यंग दो अपोजिट वर्ड्स है, वो यूज है। सेकेंड लाइन टोटोलॉजी, थर्ड लाइन नो फिगर ऑफ स्पीच, फोर्थ लाइन नो फिगर ऑफ स्पीच, फिफ्थ लाइन इन्वर्जन, सिक्स्थ लाइन एलिट्रेशन। नेक्स्ट पैरा, first line no figure of speech, second line climax, and third line no figure of speech, fourth line no figure of speech, fifth line tautology and climax, sixth line no figure of speech. Last paragraph, first line inversion, second line no figure of speech, third line no figure of speech, fourth line repetition and climax. So अभी हम लोग देख लेते हैं appreciation of this poem. The poem Somebody's Mother by the famous writer Mary O'Brien, in which writer beautifully described the situation in which a mother goes. He also described about helps that others do. Sometimes help comes from unknown person. This is what really in the poem about physical condition of a mother, which may be look like a aged woman. The writer shows some sorrow in the poem along with the joyful. It's about inspiring other in helping other. You can even add about the figure of speech used in the poem, and also about your favorite lines in the appreciation of the poem. Okay, I have given just my opinion. You can even add a figure of speech and rhyming words and rhyming scheme of the poem. Now I'm going to tell you the answers for the English workshop questions. First question is, pick out lines from the poem that help create images of the following in our mind and write them in the table. So पहला क्वेश्चन में हमें एक ये टेबल के आंसर्स देने हैं, वो वहाँ पर सिर्फ एक टेबल बना है, मैंने इधर आंसर्स भी दिए हैं, और एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी लाइंस पोएम में से लिखो जो हमारे मन में, वो लाइन रीड करने के बाद हमारे मन में वैसा एक इमेज बनता है इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब ओल्ड वीमेन, स्ट्रीट, स्कूल बॉयज़. सो मैंने दिए लाइन्स. फर्स्ट है ओल्ड वुमेन में देखते पहली लाइन, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे. सेकेंड लाइन, एंड बेंट विद द chill of a winter's day. Third line, he guided the trembling feet along the street. First line, the streets were white with the recent snow. Second line, at the crowded crossing she waited long. Third line, lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in the slippery street. Schoolboys, first line, down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. Second line, came happy boys like a flock of sheep. Third line, hastened the children on their way. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. राइट एट लीस्ट 5 राइम्स फ्रॉम द पोएम. राइम्स मतलब राइमिंग वर्ड्स के पास 5 लिखने हैं. फर्स्ट है ग्रे डे, स्नो स्लो, शाउट आउट, शीप डीप एंड फीट स्ट्रीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. Next question, give in your own words 2 reasons for each of the following. We have to give 2 reasons for each of the following. The woman was reluctant to cross the street by herself. Answer, first is she was old and weak, and second is she was afraid of being run over by the horse carriages. Second, the school boys were in a happy mood. Answer, first is they were let out from school. Second is it was freedom from a long busy day. C1. One of the school boys helped the old woman cross the street. Answer, first is he felt it was his moral duty. Second is you also knew that someday when his mother would need help, a stranger like him would help her in return. We must help those who are in need. Answer, first reason is your heart feels happy and content. Second reason is you never know when you need help in return in life. So I am ending this lecture here only. Please like and subscribe my channel, and any doubts put in the comment section.